दोस्तों वेलकम बैक। सबसे पहले थैंक यू चैनल को कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो है हम अपनी स्टारफील्ड की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में जो है हमने हेड्रियन के कोलीग को, डॉक्टर पर्सिवल वॉकर को जो है ढूंढा था, उनके ऊपर जो भी डेप्थ वगैरह था वो सब क्लियर करके उनको रेस्क्यू किया था। और फिर उनको पता चला था कि भाई वो जो टेरर मॉफ का टिश्यू सैंपल है वो लंडनियन में जो अटैक हुआ था सेम उससे सैंपल से मिलता जुलता है। तो वो लोग काफ़ी वरीड थे कि भाई इतनी जल्दी ये टेरर मॉफ कहाँ से आया वो टाओ सेटी प्लैनेट पे। तो आज जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी कहानी को। तो मिशन ट्रैकर खोलते हैं और अगर हम फैक्शंस पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे ये आई विटनेस है जो कि हमारी यूनाइटेड कॉलोनीज के फैक्शन के मिशंस को आगे कंटिन्यू करता है। उसके अलावा जो है जब हमने वो जनरल टुआला से बात करी थी तो उन्होंने हमें बोला था कि भाई एक जो है हमारे को यूसी विजिलेंस पे जाके किसी कमांडर इकांडे से मिलना है। और ये लगता है कि क्रिम्सन फ्लीट का जो फैक्शन है ये ज्वाइन करेंगे हम। मिशन का नाम है डीप कवर। तो ये करते हैं, आज देखते हैं कि क्रिम्सन फ्लीट में क्या होगा। ऐसा लगता है कि हम जो है अंडर कवर जो है क्रिम्सन फ्लीट ज्वाइन करेंगे और उनके अगेंस्ट जो है कुछ सबूत वगैरह ढूंढेंगे। तो चलिए आज वाला मिशन करते हैं। तो यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। Pressure holding. Takeoff looks good. Orbital pattern locked in. ये मिशन इस तरफ है तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। ग्रैब जम का इस्तेमाल करेंगे। Nice jump. We're right on target. राइट ऑन टारगेट। ठीक है, चलिए लगता है ये है यूसी विजिलेंस। तो इधर डॉक करते हैं। Airlock integrity looks good. ठीक है, तो ये शिप को बोर्ड करते हैं। Being here on the Vigilance, I feel literally queasy. Hello, Captain. ओह अच्छा, यहीं पर ही है जिससे बात करनी है। ये कोई सिस्डेफ गार्ड है। ठीक है, तो बात करते हैं इससे। Welcome aboard the UC Vigilance. Did you have any questions before I escort you to the commander? हाँ भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं about a million questions, बट कमांडर के लिए वेट कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल वैनगार्ड बिजनेस पे हूँ तो सिर्फ कमांडर से बात करूंगा। यूसी विजिलेंस के बारे में क्या I'm बता not सकते हो? authorized to divulge information about तो this साले पूछ क्यों रहा था? vessel. Suffice to say, it's one of the toughest ships in the UC's arsenal. कुछ बता नहीं सकता? तो सवाल क्या है, ये ऐसे पूछ रहा था। ठीक है, कमांडर इकांडे के बारे में क्या बता सकते हो? Yeah, listen to him चलो, carefully. ये एटलीस्ट The बता रहा है। commander's a one and done kind of officer. In other words, he hates to repeat himself. Other than that, just observe standard military decorum, and it should keep you from serving any time on the ship's cleaning detail. ठीक है, तो क्वेश्चंस तो बहुत हैं बट कमांडर का वेट करेंगे, उनसे बात ही करेंगे Of डायरेक्टली। course, if you'd follow me, please. So, ठीक you're है। the vanguard that took down that terramorph on Tau City. हाँ भाई, हम ही थे वो। Made quite an impression around here. Everyone upstairs is talking about it. फेमस हो गए हम। That must have been one hell of a firefight. I almost regret missing out on all the fun. Hey, of course, we don't normally see that kind of action on the Vigilance, but we have our moments.
All right, Vanguard. अच्छा ये Take the लिफ्ट लेके lift जाना up है. to Ops. Commander Akande should be waiting for you. Good luck. ठीक है. उनको ये नहीं पता ना कि भाई हमने जो है लेजर्स का इस्तेमाल किया था, लेजर्स वगैरह सब सेट कर रखी थी जिससे ऑलरेडी टेरमॉफ की आधी हेल्थ चली गई थी. वो सीक्रेट हम अपने पास ही रखेंगे. लगता है वो रे कमांडर. ठीक है, बात करते हैं इनसे. There you are. Commander Kibwe Kande, UC System. Glad to have you aboard. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Tuala's offer. ट्वाला ने कन्विंस कर लिया कि भाई ये जो है ग्रेटर गुड के लिए है. अभी भी मैं पूरा आइडिया पे कन्विंस नहीं हूँ. मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ क्यों. यूसी सिसडेफ क्या है ये? UC SysDev is a division of the UC Navy. While they handle big picture stuff, we deal specifically with pirates. Since you're already involved with the Vanguard, I don't have to underline how important your contribution will be to the security of our spaceways. अच्छा, तो ये जो है डायरेक्टली सिर्फ पायरेट्स के साथ डील करते हैं, तो वही क्रिम्सन फ्लीट होगा वो. तो अभी भी जो है हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बताइए भाई. Yes, I know. I was intentionally vague when I advised Mast of my needs. But rest अच्छा assured, जी. I'll answer all your questions in due time. So, ठीक now है. that you're part of the team, allow me to introduce you to your new home. This is the operations center of the UC Vigilance. SysDev's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. लगे रहा था उसके पीछे पड़े हुए हैं. तो पूरी फ्लीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भाई एक शिप से ज़्यादा लगेगा. ठीक है, शिप तो इम्प्रेसिव है, बट मैं कहाँ पे फिट इन होता हूँ? विजिलेंस है कहाँ पे ये? और ये क्रिम्सन फ्लीट क्या है एग्जैक्टली? चलिए पहले इसी से स्टार्ट करते हैं. That's strange. According to your file, you've encountered them before. On Vectera specifically. They were the pirates that attacked your mining outpost. I'm surprised you don't remember. अरे हाँ, वो याद है ना, वो आर्टिफैक्ट छुआ था तो थोड़ी सी मेमोरी चली गई होगी. यही समझ ले अभी के लिए. ठीक है, विजिलेंस लोकेटेड कहाँ पे है? We are currently in the solar system, in deep orbit around Phobos. As to why, I'll explain momentarily. ठीक है, तो ठीक है, शिप तो इम्प्रेसिव है, बट हमारा क्या रोल है Whether this इसमें? ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. लग ही रहा Catch is that you था can't अंडरकवर just knock जाएंगे. on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. ठीक है, देखते हैं कि क्या प्लान है. तो लगता है हाँ, इनके साथ ऑलरेडी कोई प्लान है. फिनेस से ज़्यादा लगेगा पायरेट्स का अटेंशन पकड़ने के लिए. मैं डायरेक्ट अप्रोच प्रेफर करता हूँ. आई हेज्यूम यू हैव चोजन मी बिकॉज मैं एक्सपेंडेबल हूँ. चलिए ये पूछते हैं पहले. Let's get one thing straight right now, soldier. ओहो, I गुस्सा हो don't गया. care if you're from the Vanguard, the Navy, or the technician that scrapes the carbon scoring off the engine nozzles. In my eyes, your past service no longer matters. You're now an agent of SysDev, meaning that it's my job to keep you alive. चलिए, तो लगता है इसको भरोसा है हमारी एबिलिटीज पे. तो देखते हैं, लगता है इसका ऑलरेडी कोई प्लान है. तो पूछते हैं क्या है ये. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Borden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia. So you'll Acha. be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. ठीक है, सिंपल साउंड करता है. आयरन क्लैड प्लान नहीं है ये तो. जो है वो नार्क को दूर से ही पकड़ लेगी. ये मिला कहाँ से? That's कॉन्ट्राबैंड. classified. Suffice to say that the smuggler who was previously hauling it will be spending the rest of their life in prison. ठीक है, अरोरा होता क्या है भाई? Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship and you're looking at some serious fines. ठीक है. तो अगर पायरेट्स की बात करी जाए तो ये प्रॉब्ली काफ़ी समझदार होंगे कि भाई कोई ऐसे अंडरकवर आने की कोशिश कर रहा हो. तो देखते हैं That's पकड़ right. लेगी या नहीं. So it'll be your job to convince this person that you're अच्छा. the real deal. Once you ठीक है. bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering.
That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. ठीक है, कर लेंगे। बहुत कुछ चाहिए तो अब्जॉर्ब करने के लिए। मेरे एबिलिटीज में बहुत कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा, अगर ये बेस्ट प्लान है तो हम दोनों ही खतरे में हैं। तो एविडेंस क्यों गैदर करना है जब पता है भाई क्रिम्सन फ्लीट पायरेट्स हैं? Superiors need proof that engaging the Crimson Fleet is a larger priority than they're willing to admit. If we shove enough concrete evidence under their noses, they'll have no choice but to allocate the resources that I've requested. At the same time, we can use the evidence to arrest members of the Crimson Fleet, weakening them enough to strike a fatal blow. अच्छा, तो हायर मैनेजमेंट को लगता नहीं कि भाई क्रिम्सन फ्लीट जो है कुछ खास खतरे वाली है, तो इसलिए एविडेंस गैदर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करते हैं कि भाई मेरे एबिलिटीज में बहुत कॉन्फिडेंस है। If I didn't have confidence in your abilities, I would have told Commander Tuala to send someone else. अच्छा, Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. ठीक है भाई। I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. भाई सही बात बोल रहा है ऐसे तो, बट ठीक है, मैं आई कैन स्टे ऑन कोर्स। मैं प्रोमिसेस नहीं कर सकता, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा फॉलो नहीं करता। क्या है सिस्डेफ के कोड कंडक्ट एंड एथिक्स? You can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. तो ये बात तो है कि भाई क्रिम्सन फ्लीट के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं इनोसेंट लोगों को मारना पड़े। तो इसका क्या मतलब है? स्ट्रे टू फार ऑफ द पाथ। The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? बिल्कुल भाई, ठीक है। That's what I wanted to hear. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. अच्छा, तो मैं कांटेक्ट कैसे मेंटेन करूंगा आपके साथ? That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. ठीक है, ये जो बोला था उसने सरोइस बोर्डन, उसके All we know is बारे में that कुछ she's been with information the है? Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. ठीक है, अगर मैं क्रिम्सन फ्लीट के लिए काम कर रहा हूँ, अगर मैं अरेस्ट हो गया अंडरकवर तो फिर? For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. अच्छा जी, तो लगता है यहाँ पे वो बाउंटी आ जाएगी। अगर हम जैसे क्रिम्सन फ्लीट के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बाउंटी लग सकती है और फिर हमें ही फाइन दे के निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, और क्या बता सकते हो हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बारे में एज एन एजेंट? Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some ये बात तो है। morally gray decisions. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. ठीक है, I refuse to kill innocent people. What if I don't have a choice? Then you do what you have to do.
The Crimson Fleet has the potential to kill hundreds, even thousands of people per year. If it takes a few deaths to maintain your cover, then so be it. But only as an absolutely final resort. This is not a licensed killing spree. Understood? तो ये बोल रहा है ग्रेटर गुड के लिए कि भाई वो हजारों को मारते हैं, तो अगर तुम्हें 2-4 को मारना पड़े कवर में रहने के लिए तो वो कर लो. I'm not advocating violence. I'm merely urging you to weigh the consequences before you open fire. Look, I can see that you're struggling with this. So let me simplify this for you. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. ठीक है भाई, हो गया. लगता है साइड में जो है बेचारा फंस गया यहाँ पे हमारे बीच में. अब निकला. जा भाई जा. ये लगता है लेफ्टिनेंट जिलियन टॉफ्ट, सेकंड इन कमांड. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. ठीक है. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? समझ गए मैडम. तो हमारे को चोरों से चोरी करनी है. That's if I'm accepted into the Crimson Fleet. अगर कुछ ना मिले तो I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck for nothing. Criminals are sloppy. Look hard enough and I'm certain you'll stumble across their mess. ठीक है, देखेंगे कुछ मिलेगा या नहीं. तो फिजिकल एविडेंस क्यों चाहिए? Since it isn't every day we stumble across a criminal's fully written confession, we need to build a case against our suspects. The more evidence we acquire, the stronger our case becomes. And knowing the Crimson Fleet, they'll leave plenty of evidence for you to find. ठीक है, तो बेसिकली आप चाहते हो कि हम चोरों से चोरी करें. Rationalize it however you like, but that evidence is critical to the success of Commander Akande's operation. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. ओहो, गुस्सा हो गई तो. ठीक है, अगर कोई डेटा है इंक्रिमिनेटिंग तो मैं उसको ढूंढ लाऊंगा. साउंड्स लाइक कि कोई पर्सनल वेंडेटा है क्रिम्सन फ्लीट के अगेंस्ट. ठीक है, मैं बस अपना टास्क समझना चाह रहा था. ठीक है, तो ये करते हैं कि भाई कुछ तो इसको खुंदा क्या लगता है. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. कुछ तो हुआ इसके हाथ पर्सनली, फैमिली में या कुछ क्रिम्सन फ्लीट के हाथों. ठीक है, ये पूछते हैं कि क्या ये बात करनी है. No. नहीं. It's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the mission and you'll be fine. ठीक है, ठीक है, जितना एविडेंस हो सकेगा उतना लेकर आएंगे. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. अच्छा, तो पेमेंट नहीं चाहिए, क्रेडिट्स. अब मेरी बात कर रही हो. तो हाँ, ये क्यों भाई? मिलिट्री ऑपरेशन के लिए क्रेडिट्स क्यों? Well, that's just it. You're not career military, are you? And speaking frankly, you're completely out of pocket during this operation. You'll be paying for your own supplies and other unexpected incidentals. So, if I were you, I'd stop asking questions and accept the compensation. ठीक है, that's very generous. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. ठीक है. All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. ठीक है. Feel like discussing your personal experience. हाँ, ये पूछते हैं कि भाई अरोरा के साथ पकड़े गए क्योंकि ये Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble, even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake.
ठीक है, नहीं करेंगे ऐसा। तो जिन लोगों को अरेस्ट करोगे उनके हाथ क्या We'll be होगा? keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. ठीक है। जो क्रिम्सन फ्लीट के साथ एक्सपीरियंस था उसके बारे में बात Not करनी है। really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. ठीक है। It's odd that you know more about me than I know about you. ठीक है, दिमाग में ऐसा कुछ है तो बात करोगी तो बेटर फील होगा। Yeah. Maybe. No, it's not really an appropriate time to be going over my private life. There are much more important things to be done. Let's just stick to the job at hand and concentrate on the mission. But, maybe we can talk about it some other time, okay? लगता है अभी बात करना चाहती है, बोलना चाहती है, I'll be दिल here if हल्का you हो have any more जाएगा। questions. बट टफ एक्ट कर रही है मिलिट्री में है तो ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। बाद में हो सकता है पता है क्या हुआ उसके साथ। Excuse me. बट अभी के लिए चलते हैं ऊपर। आजा भाई आजा। वास्को, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल। Oh, we're back. Sometimes I just want to turn off the चलिए तब जो है सिडोनिया पे चलेंगे और वो जो ट्रेड अथॉरिटी में उनकी कांटेक्ट है उससे बात करेंगे। अनडॉक करते हैं यहाँ से। Separation complete. चलिए सेपरेशन हो गया। यहाँ पे देखते हैं। Following in your footsteps right now. It's so cool. ट्रैवल करते हैं मार्स पे। You are entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. ठीक है, कर लो स्कैन जल्दी से। Hey, कुछ Dad. नहीं है। Want to hear a Scan poem I wrote? complete. हो गया, ठीक है। प्लेनेट मैप खोलते हैं और ये रहा सिडोनिया। लैंड करते हैं इधर। A haiku, huh? Sounds exciting. चलिए तो ये कहाँ पे है? ट्रेड अथॉरिटी में चलते हैं। अरे हट जा। Crime's at an all-time low around the world. चलिए पहुंच गए। अच्छा यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, बात करते हैं If you're here इससे। to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. अरे जो हम बेच रहे हैं वो उसमें तू बहुत इंटरेस्टेड होगी, रुक जा। मैं कुछ लेकर आया हूँ जो क्रिम्सन फ्लीट जिसमें इंटरेस्टेड होगा। I'm looking to unload a sensitive shipment. ठीक है, तो sensitive shipment And इस्तेमाल by करते sensitive, I'm guessing you mean something you don't want UC security sticking their noses into. हैं। बिल्कुल I सही। can probably help you with that. What have you got for me? चलिए। I'm looking to sell off a shipment of Aurora. पहले पैसों की बात करते हैं। I'm not talking price until I know what the hell I'm buying. चलो सही बात है, तो ये सैंपल देख लो। Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? The Trade Authority turning down contraband. Well, if that doesn't take the cake. Or not take the cake. सैम ये हमेशा ऐसी बकचोदी मारता रहता बीच बीच में। ठीक है, अगर तुम नहीं हैंडल कर सकती तो मुझे बताओ कौन कर सकता है। मुझे लगा था ट्रेड अथॉरिटी कुछ भी खरीद लेगा। लगता है जिन लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था गलत बताया था कि तुम बेस्ट हो। हाँ तो ये करते हैं, थोड़ी सी इसकी ईगो हर्ट होगी। No, they're right. What they didn't tell you is that I have a self-preservation streak a kilometer wide.
Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. ठीक है अच्छा तो या तो हम इसको 1000 क्रेडिट दे सकते हैं या मना कर सकते हैं या फिर यह है कि भाई मैं बस तेरे को गोली मार देता हूँ और किसी और से पूछ लेता हूँ I have to pay you just to find out where to sell my shipment. तो ये इस्तेमाल करते हैं. You must be new at this game, love, so I'm gonna let that one slide. In our business, nothing gets done until money is exchanged, even if that means leaving a credit on each and every rung of the ladder as you climb your way up. तो यार देखते हैं 1000 क्रेडिट्स चलो दे देते हैं क्योंकि इसको पिस ऑफ करने में कोई फायदा नहीं है. इसकी हेल्प चाहिए हमारे को. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unlock that stuff for you. My faith in the seedy underbelly of the settled systems is restored. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. तो चलिए बात करते हैं ये एडलर कैंप से. इधर ये ऊपर. Mars is wrapped with resources, which means चलिए unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. अबे रुक जा बेटा. इसने बोला था कि भाई तुम हेल्प कर सकते हो इसको मूव करने में. ठीक है तो ये पहला वाला इस्तेमाल करते हैं. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. अरे भाई शांत. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. क्या है बताओ. उसने सरोस ने ऐसा तो कुछ नहीं बोला. छोड़ मैं शिपमेंट कहीं और लेके जाता हूँ. Who's we and us? मुझे लगा था मैं तो सिर्फ तेरे से डील कर रहा हूँ. तो क्रिम्सन फ्लीट का पार्ट है ना तो पहले ये पूछते हैं ये और us ये कौन है. Let's just say I have a certain influential affiliation and leave it at that. Basically, you want that Aurora moved, I'm your guy. ठीक है ये भी पूछ लेते हैं. पक्के आधा फिर से खुंदा खाएगा. Pipe down! What the hell's the matter with you? लगे You रहा want to था. get us both thrown into lockup? Look, I don't know what that big-mouth Saoirse told you, but I keep who I run with a secret in public, and I suggest you do the same. Now, do you want my help moving your product or not? हाँ भाई बिल्कुल. तो बताओ क्या है. अगेन इसकी जो है कॉन्फिडेंस गेन करना है तो मना नहीं कर सकते. Right down to या सीधा मना नहीं करना business, चाहिए. and no small talk. I like it. चलो. This whole thing's giving me the worst sort of deja vu. If you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. ठीक है कर देंगे. मैं ही उसका डेट पे कर देता हूँ. ठीक है मैं उसको मार देता हूँ और उसके कॉप से पैसा ले लूँगा. हाउ लाउड डू यू वांट टू बी अबाउट इट. ठीक है कर देंगे. Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. ठीक है चलते हैं. अब जो है लगता है हमारे को डेट कलेक्ट करना है फिर से. A sober Sidonia is a safe Sidonia. While indulging in alcoholic beverages is not देखते हैं operating heavy machinery इधर से while जाना है under नीचे. influence is dangerous to yourself and those around you. Please always drink responsibly. अच्छा लिफ्ट लेके नीचे जाना है रेजिडेंशियल एरिया में. ओह ये सामने ही बैठा. ये रहा कार्ल फील्डिंग. Something I can help you with? हाँ भाई मैं जो है एडलर का जो है डेब्ट कलेक्ट करने आया हूँ.
उसने भेजा है तेरे को एक लेसन सिखाने के लिए। ठीक है, तो पहले शांति से बात करते हैं, देखते हैं शांति से देगा या नहीं। मारने की जरूरत नहीं है। Who the heck is that? अच्छा जी, who the heck is that? तो सीरियस है, अपने डेप्ट के बारे में, पैसे दे दे। हाँ तो Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. बेटे गोली दे ले, कुछ नहीं होता। I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. रुक जा बेटे, बताता हूँ। तो ठीक है, मैं जाके एडलर को बताता हूँ, या चलो भाई, नाइस नोइंग यू। आई एम श्योर तुम्हारा फ्यूनरल बिल्कुल एकदम बढ़िया जाएगा। तो ये करते हैं, थोड़ी सी फटेगी इसकी। Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Adler? अब धीरे धीरे याद आने लगा होगा नाम। Oh, wait. You mean that Adler? Yeah. जैसे तू Sorry. 5-6 एडलर को I thought you were जानता है। talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? भाई एक हफ्ते का टाइम नहीं है हमारे पास। नॉट गुड इनफ। एडलर उस ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं होगा। अभी दे दे, वरना डेमोस जो है तेरे कॉप्स को घर भेजेगा। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। Come on. Give me a break. What the? Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? It's funny how whenever someone's there to collect the debt, everyone poor as a list dirt farmer. सैमी तो क्या है? अच्छा 3000 क्रेडिट का डेट है, तो प्रॉमिस कर कि भाई एडलर से और नहीं लेगा, तो मैं तेरा डेट पे कर दूंगा। परसुएट करने की कोशिश कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि भाई क्रेडिट्स क्यों नहीं है, तो छोड़ो, नौटंकी कर रहा है। परसुएट करते हैं। दारू पीने के वैसे हैं। Why are you doing this to me? I don't have the money. चलिए, तो परसुएट करना है। 4 बार्स हैं, 3 टर्न है, तो तरीका है कि भाई हम दोनों इससे खुशी खुशी निकल जाएं। ये वर्थ द रिस्क है या नहीं? मतलब पैसे तो कभी बना सकते हो, अभी पे कर लो, अपना रिवेंज बाद में ले लेना, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए सही। तो ठीक है, ये ट्राई करते हैं, या ये ट्राई करते हैं कि भाई अभी पे कर दे, अपना रिवेंज ले लियो बाद में। Yeah, sure. And then I'll have the whole Crimson Fleet gunning for me. Brilliant. Brilliant idea. ठीक है, तो देखते हैं वर्थ द रिस्क है या नहीं। Sure. चलिए। I guess I could ask for a 7-day shift. I don't know. और क्या है? अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए सही। चलिए, हो गया परसुएड। Oh my God. He might come after them? Because of me? बिल्कुल, और क्या? I hadn't even thought of the possibility. Please. साले। Tell Adler I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. I didn't have much of a choice. चलिए, 3000 क्रेडिट्स दे दिए इसने। वापस चलते हैं अब। एडलर को खुशखबरी देते हैं। इधर से ऊपर। ले भाई, खुश हो जा, तेरे 3000 क्रेडिट्स ले आए। हाँ, ये ले। Would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore, or did he get the message? नहीं भाई, फटली उसकी, अब नहीं आने वाला। Nice, nice. You're kind
natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. अब करी ना सब बात. Running with my associates. बिल्कुल भाई, tension not. If you think they can handle me, yeah, मैं interested हूँ. Not sure ये associates हैं कौन exactly. If you haven't figured that out by now, then maybe you aren't cut out for our line of work. अरे नहीं गुस्सा मत हो. If you That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Neva Mora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. तो चलिए 5,800 क्रेडिट्स. लगता है ये वाला मिशन कंप्लीट हुआ. डीप कवर. अगला मिशन स्टार्ट हुआ है रूप मीट्स किंग. एक बार मिशन ट्रैकर खोल के देखते हैं जल्दी से. हाँ तो इसको बंद करते हैं. ये देखते हैं. ठीक है तो वो ये एडलर कैंप का हमने काम किया. तो अब जो है हम जाके क्रिम्सन फ्लीट में सुपीरियर से मिलेंगे, नेवा मोरा से, जो कि सेकंड इन कमांड है. तो ठीक है चलते हैं. If you're looking for a trick. Okay. Found a clutch of key leeches. यहाँ से जो है फास्ट ट्रैवल करते हैं शिप पे. Board's green. Ready for what comes next. ठीक है टेक ऑफ. Lifting off. Apogee kick complete. Orbit steady. ठीक है देखते हैं. ये रहा Solomon Co would have liked me. Sure. जुपिटर के पास यूरोपा. Like you. Well, if you listen to your grandpa, Solomon Co would have given you a coordinate. But I think he would have liked the man I grew into. ठीक है सामने ही है. To show up. Looks like Adler finally did something right for once. चलिए तो ये कोई लगता है ट्रांसमिशन आ रही है तो एक्सेप्ट करते हैं. Big shot. I hear Adler thinks you're good enough to join our crew. Yes ma'am. हाँ मैं उसी के लिए हूँ. Damn right I am. Adler ने बोला I didn't know he cared. हाँ तो damn right I am. थोड़ा सा. Bet your life on that? Because the only way out of our organization is with a warhead up your grab drive. So, before I put you to work, let's get everything out in the open. I don't know if Adler mentioned it, and for his sake, I hope he hasn't. But you aren't about to sign up with any average pirate crew. You're signing up with the Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. अच्छा There's a लग ही रहा medical था. supply ship called the Ragana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. ठीक है हो जाएगा. सोचने दो क्या ऑप्शन है जॉब को कंप्लीट करने के लिए. इसको खुद क्यों नहीं मारती. मेडिकल सप्लाई शिप क्यों. कोई इस पे लूट थोड़ी ना होगा कुछ. तो ये पूछते हैं. लगता है ये ऑस्टिन रेक को मारना चाहती है स्पेसिफिकली. लूट के बारे में नहीं है. Keep whatever worthless junk is on that ship. Just remember, the only thing that matters is that Rake dies.
इसका भी लगता है कुछ पर्सनल वेंडेटा है रेक के साथ, तो खुद ही क्यों नहीं मारती रेक को। I need you to learn what'll happen if you decide to turn your back on the fleet. Consider it your glimpse into a possible unfortunate future. So you'd better pay close attention. तो लगता है ये जो ऑस्टिन रेक है ये धोखा दे के भाग गया या फ्लीट छोड़ दिया होगा उसने किसी रीजन की वजह से, तो अभी उसको पकड़ के मारना चाहती है। तो क्या ऑप्शंस हैं जॉब कंप्लीट करने के लिए? That's your only option. अच्छा जी। If you want my advice, there's only one way to guarantee he dies. Turn the Ragana into space junk. Only way to be sure. ओह, तो बेसिकली पूरे शिप को ही उड़ा दो। ठीक है, It's done when Rake stops breathing. कर देंगे मैडम। Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. You know, I dealt with a lot of phony tough guys and trash-talking pirates in my time, and most of them aren't worth the oxygen. But I'll tell you right now, Neva, she's the real deal. अच्छा जी, चलो सैम को भी लग रहा है कि भाई ये रियल डील है। अच्छा, अभी भी 2 क्वेश्चन है, तो भाई ऑस्टिन रेक को मारना क्यों चाहती हो, पता करते हैं। Hell, I'm the one who vouched for him in the first place. इसीलिए। Back then he had a different name and a different identity. He was a damn good earner too. Brought in a ton of creds. Everything was fine until he wanted out. So he ran. And nobody, I mean nobody, वही runs away from the fleet. तो ये है कि एक बारी ज्वाइन कर लिया तो भाई छोड़ के नहीं जा सकते, जब मरोगे तभी छोड़ सकते हो बस। और इसके लिए तो इसने पर्सनली वाउच किया था, तो इसलिए और भी खुंदक है इसको। तो इतनी सर्टेन क्यों हो कि भाई ये ऑस्टिन जो है ये रगाना पे है? He's making it tough, not gonna lie. He changes his location and identity so often it's costing me a small fortune just to keep tabs. But you know what? It's worth every damn cred. He's made me look like a fool in front of Delgado, and I'm gonna have his head on a pike. वही है कि पर्सनल वेंजेंस के लिए। ठीक है, निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं इधर। ये रहा। तो ये वैसा मिशन लग रहा है भाई जहाँ पे हमारे पास वो मॉरल डिलेमा है कि भाई हम इसको मारे या ना मारे। लगता है पहले फ्लीट में काम करता था, बट इसको जो है या तो पता चला होगा ज्वाइन करने के बाद कि भाई बहुत ज़्यादा वायलेंस है वगैरह वगैरह, तो इसे छोड़ दिया। तो एक्सेप्ट करते हैं इनकमिंग ट्रांसमिशन। इसके बाद हमारा लेवल अप भी हो गया। तो आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू। तो हमारे पास हाँ 2 ऑप्शन है कि या तो हम अच्छा रगाना को ही कन्विंस करें। एक बारी मिशन ट्रैकर खोल के देखते हैं जल्दी से। हाँ, तो या तो हम रगाना को कन्विंस करें कि भाई ऑस्टिन रेक को मार दो, या फिर कोई तरीका ढूंढें उसकी लाइफ को स्पेयर करने का। तो चलिए ये ट्राई करते हैं। मारना तो बहुत आसान है, तो ट्राई करते हैं कि कैसे हम उसकी लाइफ को स्पेयर किया सकता है। तो तुम्हारे पास एक क्रूमैन है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। लुक्स लाइक ट्रबल हैज़ फाउंड यू हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द क्रिम्सन फ्लीट। या फिर अटैक कर सकते हैं सीधा कि भाई तुम सीधा ग्रेफ पे जा रहे हो। तो सबसे पहला वाला करते हैं कि भाई बैड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। I do not understand. Please confirm your intentions. तो क्या है, यूसी सिस डेफ से हूँ मैं। द फ्लीट वॉन्ट्स ऑस्टिन रेक डेड। ठीक है, तो मैं तुम्हारी शिप को बोर्ड करके उससे बात करना चाहता हूँ कि उसको कैसे स्पेयर कर सकते हैं, या फिर कि भाई मैं क्रिम्सन फ्लीट से हूँ और अपना हैच खोलो, मैं बोर्ड करूँगा और उसको पेल दूंगा। या एक डिमांड है कि भाई मार दो ऑस्टिन रेक को और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यह है कि भाई अटैक करो। तो ठीक है, सबसे ऊपर वाला इस्तेमाल करते हैं कि भाई शिप को बोर्ड करेंगे और देखते हैं इसको कैसे स्पेयर किया जाए। I do not know. Well, normally I would say no, but frankly it will be safer for us that way. बिल्कुल सही बात। You can dock. We will talk then. तो चलिए डॉक करते हैं। तो अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, हम डॉक करने के बाद चाहें तो फिर भी मार सकते हैं या फिर स्पेयर करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। तो बोर्ड करते हैं। When you get a moment,
Can we talk? इस सैम को फिर बात करनी है। ठीक है, बाद में करेंगे भाई, रुक जाओ। अभी हम मिशन के बीच में हैं। ओह, ये सब तो बिल्कुल एकदम चाकू तलवार लेके खड़े हुए हैं। If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. वही तो। If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. चलो, कुछ तो समझदारी की बात बोली। ठीक है, तो कॉम्स पे कौन सुन रहा था पता करना मुश्किल है, तो ये सेफर है, इसलिए मैं बोर्ड पे ऑन बोर्ड आया। ठीक है, मेरे को बस पता करना था कि भाई यहाँ पे कोई असल लूट ना हो। तो मिस ऑस्टिन रिक कौन है, या फिर हम अटैक कर सकते हैं और सबको मार सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यूज करते हैं। That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. अरे समझदार है लौंडा। Do you mind telling us what this is all about? दिमित्री। तो अच्छा, ये वही ऑप्शंस हैं। और अच्छा, हम परसुएट कर सकते हैं इनको कि भाई ऑस्टिन रिक जो है क्रिम्सन फ्लीट का पायरेट था, तो उसको मार दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऑन सेकंड थॉट मैं सबको मार दूंगा। तो ये पूछते हैं कि भाई रेक को प्रोटेक्ट करने के लिए I will not murder a man in cold blood. You will have to kill us all first. चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं। हाँ, ये वाला है विदाउट वायलेंस। You really do not know which one of us is Rake, do you? सैम को पसंद आई बात। And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. हाँ भाई। Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. ठीक है, तो अगर वो अपने आप को यूसी सिस्टेफ पे टर्न इन कर दे, ठीक है, उसको जो है सिस्टेफ पे डिलीवर करो। अगर फ्लीट को पता चल गया तो हम दोनों खतरे में हैं। फ्लीट ये बात नहीं मानेगी तो किसी और को तो मरना ही पड़ेगा। तो ये सेकंड वाला करते हैं कि भाई उसको ऐसे कहीं भी मत छोड़ो, सिस्डेफ पे खुद ही डिलीवर करो उसको, वरना हम दोनों फंसेंगे। That is fair. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? ये अब आएगा सामने। It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. चलिए, समझदार है ये लौंडा। तो मेडिकल सप्लाईज कुछ ऐड हो गए। चलिए, तो वापस जो है चल के अब नेवा से बात करेंगे। तो ये लोग उसको छोड़ देंगे सिस्टेफ पे। अरे रुक जा भाई, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो अनडॉक करते हैं यहाँ से। चलिए, तो इस तरफ चलते हैं वापस जुपिटर की तरफ। इधर है यूरोपा 2.1 LS। चलिए, हमें पहुंचे। ओह, लगता है ये तो अटैक हो रहा है इसके ऊपर। हाँ, चल रुक जा, करते हैं हेल्प दे। चलिए, एक तो गया, दूसरा यहीं पर ही है। रुक जा बेटा। हाँ, ये बात तो सही बोली। चलिए, मुझे भी लगता है ऑलमोस्ट। ये भी गया। चलिए, ये आखिरी।
थोड़ी सी हेल्थ बची है। हमारी मिसाइल्स वगैरह ख़त्म हो गई हैं अभी। जब तक रीलोड नहीं होती तब तक धीरे धीरे मारना पड़ेगा इसको, बट जाने ही वाला है। चलिए, इसकी शील्ड तो गई और ये मिसाइल के साथ मर गया। चलिए बढ़िया। थोड़ा सा इधर मटेरियल है, ये लूट लेते हैं पहले। Jump drives restored. चलिए, शिप पार्ट मिल गया और देखते हैं कुछ है क्या। हाँ, इधर थोड़ा सा और मटेरियल है। 3 शिप्स को मारा तो 3 होंगे, तीनों लूट लेते हैं। ऐसा करते हैं, इंजन में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, ताकि जल्दी चल सके। ये भी हो गया, कुछ क्रेडिट्स भी मिल गए। और देखते हैं एक और है इधर, चलते हैं इस पे। 2500 मीटर के करीब है। Are you okay, Dad? You look tired. Yeah, you're sweet to worry, darling. I'm alright. Your dad's just not as young as he used to be. चलिए पहुंच गए। कोबाल्ट और न्यूक्लियर फ्यूल कहाँ है ये? ओह, इसकी हेल्थ काफ़ी कम ही रह गई थी वैसे तो ठीक है, हेल करते हैं, बात करते हैं। I had it under control, but definitely went faster after you jumped into the fight. अबे कहाँ अंडर कंट्रोल, एक और पड़ता तो मर जाती। Give me some good news, then we can go celebrate. हाँ, मार दिया उसको। ऑस्टिन रेक इज डेड, द रकाना सर्वाइव्ड। एक्चुअली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। इक्लिप्टिक कौन है और इन्होंने क्यों अटैक किया, पहले ये पता करते हैं। Mercenaries, guns for hire that shoot their own parents if they were paid enough. अच्छा जी। We do a hell of a lot of dirty work in the Crimson Fleet, but we'd never sell away our souls like an ecliptic merc does. ठीक है, लगता है एक और गैंग है। ठीक है, तो उन्होंने अटैक क्यों किया? You know what? I have no idea, and it's frustrating the hell out of me. I suppose I could have pissed off someone I screwed over in the past, but तभी कहते हैं इतने दुश्मन नहीं बनाने चाहिए हर जगह। ठीक है, तो ऑस्टिन रेक मर गया, बट रगाना सर्वाइव्ड। No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands are clean. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. चलिए, मान लिया इसने लगता है। You wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yep, it's that simple. इतना आसान था। Hope this business with rakes taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? ओहो, यही करती रहेगी ये लगता है जिंदगी भर फिर। ठीक है, बेस्ट डिसीजन यू एवर मेड। आई डोंट रिस्पॉन्ड वेल टू थ्रेट्स या अबाउट डैम टाइम। तो बेस्ट डिसीजन यू एवर मेड। Last person who said that was Rake. So you've already dug yourself a hole about 6 feet deep. ठीक है, ठीक है। You know the deal. It's time to see what you signed up for. ठीक है, चलते हैं। I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key. The fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. तो लगता है अब हम जाएंगे इनके हेडक्वार्टर्स पे। An easy initiation, but at least they trust us. हाँ। Not as far as they can throw us, but in time we'll shed those kilos. ठीक है, तो देखते हैं इधर क्या है मिशन का। मार्स, क्या वापस सिडोनिया पे जा रहे हैं? Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. अच्छा, फोबोस पे जा रहे हैं। हो गया। ठीक है, चलते हैं। लगता है वापस विजिलेंस पे जा रहे हैं। उनको अपडेट देंगे। ठीक है, डॉक करते हैं। हाँ, वही बोर्ड द विजिलेंस। Solid docking job there. Nice work.
ठीक है, बोर्ड करते हैं विजिलेंस को, अपडेट देंगे इनको. Cannot believe I'm on time's right. I'd appreciate a chat. हाँ ठीक है, चल जल्दी चल. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied. सब अपने अपने में बात करने में लगे हैं. किसी को फर्क नहीं पड़ता कि भाई हमें नहीं सुननी तुम्हारी बकवास. ठीक है, चलिए लिफ्ट खुल गई, चलते हैं ऊपर. The Regana made it to port. Commander. We got the message from the Regana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate port, off the books. चलिए. Suffice to say, he's got a lot to answer for. ठीक है, अच्छी बात है, सरेंडर कर दिया. मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, इनोसेंट हो या अदरवाइज. मेरे को खुद ही मार सकता था, बट क्रू जो है ट्रॉमेटाइज हो जाता. अच्छा, मैंने अपना कवर रिस्क किया इसके लिए, तो अप्रिशिएट कर लो ये बात. हाँ, रेक से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्या फ्लीट के बारे में? Looking into, but it doesn't seem like he knows much. He might be better served as अच्छा लगता है उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं है. For now, we'll keep him in the brig. Perhaps you could pay him a visit there sometime. I'm sure he'd be pleased to see you. हाँ, हमने जान बचाई उसकी. ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, सरेंडर कर दिया. That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Just remember not to lose yourself in the part. I hate to say it. Sometimes folks gotta die. But this was not one of those situations. चलिए, सैम को बात पसंद आई कि हमने उसको बचाया. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. अच्छा जी. There was concern after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensure that would not be a problem. अच्छा, शाना है भाई, ये शाना है बिल्कुल. चलिए, रिस्की मूव था, क्लेवर वे था. वही है कि ना तो उसकी डेड बॉडी थी ऑस्टिन की, और ना ही हमने रगाना को डिस्ट्रॉय किया था, तो हो सकता है कि उसको शक होता. तो वो शक अवॉइड करने के लिए इसने ये प्लान बनाया. चलिए, बढ़िया. तो एक्लिप्टिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रिम्सन फ्लीट पर अटैक करने में. For hire. If they are paid enough money, Ecliptic would attack the vigilance. अच्छा जी. It wasn't terribly difficult to convince them to attack an isolated Crimson Fleet ship. Just expensive. चलिए, तो क्लेवर था ये प्लान. So I take it you have good news. Were you able to join the fleet? हाँ, लगता है मैंने उनका इनिशियल टेस्ट पास कर लिया. प्लान जो था अच्छा था, फ्लीट को कुछ सस्पेक्ट नहीं हुआ. हाँ, तो ठीक है. It's a dangerous plan, and you came awfully close to killing an innocent crew. Luckily, you have a good head on your shoulders, and did the right thing. बिल्कुल भाई. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Saoirse was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. ठीक है, अभी तक सब प्लान के मुताबिक है. इन गधों को अभी तक कुछ पता नहीं चला है. नेवा के बारे में क्या पता है? A woman has a record that could stretch across Seoul and back. अच्छा जी. Started young as one of Neon's street rats and worked her way up to second in command. She's a force to be reckoned with, so don't underestimate her. ठीक है, अभी तक तो सब प्लान के मुताबिक जा रहा है. You passed your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? ठीक है, तो क्या है, नेवा से मिलना है की पे, जो उनका बेस है. कोऑर्डिनेट्स मिले हैं क्रिम्सन फ्लीट के बेस के. अच्छा, हम झूठ बोल सकते हैं कि हम नेवा से फिर से यूरोपा के पास मिल रहे हैं. क्या है कि विजिलेंस से निकलूँ ना मैं जल्दी से, इससे पहले मेरा कवर ब्लो हो. ठीक है, तो I was told to meet नेवा. ये है कि कोऑर्डिनेट्स मिले हैं क्रिम्सन फ्लीट बेस के. If you're heading to the key, I assume you'll be meeting Delgado soon. हाँ हाँ बिल्कुल. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but
Delgado's? Most of all. Ugh, no one said there was going to be homework. I assure you, बैठ के there's फाइल्स only पढ़नी पड़ेंगी information अब that is इनकी. pertinent to the mission. Our dossiers are designed to be succinct. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. ठीक है. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. चलिए ठीक है, तो ये हुआ. अब जो हम वापस जाएंगे. अरे रुक जा भी नहीं, ये मिशन के बाद ही बात करेंगे अब हम. चलिए तो चलते हैं. अब जो है हमारे को क्रिम्सन फ्लीट के होम बेस पे जाना है, द की. तो यहाँ से अनडॉक करते हैं. Docking seal released. कहाँ पे है? इधर. ठीक है, चलते हैं. क्रिक्स. ओह, लगता है ये हमारे जंप रेंज के बाहर है, तो पहले इधर आते हैं. अच्छा, ग्रैब जंप में एटलीस्ट एक रिएक्टर डालना है. ठीक है. एक जंप और लगानी पड़ेगी इसके बाद. Well, you didn't put us into a planet, so we must be in the right place. नहीं, क्रिक्स की तरफ. हाँ ठीक है. चलिए, टक 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 हो गया. चलिए पहुंच गए. सामने ही है. तो डॉक करते हैं इधर. Not in a long time, sweetheart. Not since you were born. What was it like? Terrible. It was terrible. And we are locked in. Stay away from चलिए stuff. तो बोर्ड करते हैं. Trust me. और फिर नेवा से बात करनी है. You got your cut. Now get out of my face. ये रीच सामने है. But it was 30. Big difference on 40% अभी बिजी है लगता है, इनकी बातें सुन रही है. 30. You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. लगता है दोनों की लड़ाई हो रही है. If you're stealing from me, you bet your ass it's your You require my assistance. ओए, अपने पार्टनर को गोली मार दी. Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. अच्छा, Sounds like you did the fleet a favor. लगता है आपस में ही एक दूसरे से चोरी कर रहे This थे. body out of an airlock before it turns into a damn अरे air बैठ रहे यार. ठीक है, बात करते हैं नेवा से. The hell took you so long? Forget how to grab jump or something? सॉरी, अपने अफेयर से कुछ jobs done and I'm here, so back off. क्यों, मुझे मिस कर रही थी क्या? Please. It'd be one less sloppy rook whose mess I had to clean up. अच्छा The जी. last thing I need is another Austin rake getting cold feet. You want to leave the fleet? You pay the price. Not in credits, but in blood. ठीक है जी, सॉरी. Never apologize. Not if you want anyone in the fleet to अच्छा, respect you. चलो ये भी And है. if they don't respect you, put a gun to their head and they'll get the message. चलो, All सही that कहेंगे गुंडों का. aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. अच्छा. Since he's ready? Good. लगता है हिस्ट्री बताएगी This क्रिम्सन फ्लीट के बारे floating में. scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now
अच्छा It's the fleet's base यूसी of का ही जो है operations. मिलिट्री स्टेशन था ये Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. ठीक है तो आरएनआर के लिए सही है ये जो है जगह बिल्कुल बकवास है हाँ तो यूसी को पिस ऑफ करता होगा कि भाई तुम लोग उनके जो है स्टेशन को अपना बेस बना रखे हो तो क्रिम्सन फ्लीट ने क्या पूरा यूसी स्टार स्टेशन ओवरटेक कर लिया Sure did. Right out from under their noses. Way before you or I were born, though. अच्छा We've इतना held this पुराना है ये station ग्रुप for a very long time. Don't worry. Delgado will tell you all about it. ठीक है तो ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि You यूसी think? बिल्कुल एकदम खुंदक And में that's होगा only part of it. I'll let Delgado fill you in on the whole story. He tells it better anyway. चलिए I can give you the short ठीक है version वेट while we करेंगे walk the station. I'm sure the UC is happy with you guys rubbing their nose in their biggest, most monumental mistake. Anyway, I'll tell you all about the key. But it's better if I show you too. Follow me. ठीक है देखते हैं कहाँ लेके चलेगी इस तरफ All right. You got time History for a quick chat? time. I appreciate it. So, the key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Cute, huh? अच्छा हाँ ये सही है ये बिल्कुल जैसे हॉगवर्ट्स में जैसे घोस्ट होते हैं ना बिल्कुल दरवाजे के थ्रू दीवार के थ्रू चले जाते हैं इसमें भी ऐसे ही है When the time's right, I'd appreciate a chat. अरे सुन ली भाई तेरी बात Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the key, credits are king. ठीक है What the hell is this? ये क्या हो रहा है सामने All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. अच्छा So ठीक है anyway, we were talking about the Lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key. About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. तो ये लगता है यहाँ का डिपो है जहाँ से हम सामान वेपन्स वगैरह खरीद सकते हैं Get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. Should have done her homework. इसको भी लूट लिया भाई लोगों ने Yeah, sure, कितने laugh it कमीने up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. ठीक है Back to my story. यहाँ पे हम वेपन्स और After आर्मर the वगैरह खरीद liberated सकते prisoners हैं grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. अच्छा That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. ठीक है ये Meet कौन है Zuri, Queen of the Rare Exports. If I don't have it, you don't need it. वाह Neuroamps, सही blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way. बताओ Oh no. नेवा को धमकी Rook, दे दिया protect me from Zuri's vengeance. हमें सेकंड इन Enough of कमांड the है वो bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. On the right, you've got Bradley from the Trade Authority. I'm अच्छा sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how hot. चलिए ठीक Then है we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up.
If you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay. This is our final stop. देखते हैं क्या Over ये there, final stop. you've got the Last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. अच्छा. And right here is the most important place on the entire station. The Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Rake? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, लगता है आपस में जो है Shinya handles इनकी our तूतुएं में life. चलती रहती है शिप पे. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. क्या है इसके chest पे? Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. ठीक है, तो लगता है इससे बात करनी है शिन्या बॉस से. तो बात करते हैं. चेस्ट पे पता नहीं क्या लगा हुआ है इसका ये. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. अरे बॉम्ब लगा हुआ है इसके चेस्ट पे. I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. अच्छा, तो क्या है कि ये ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया. काफ़ी क्लेवर है. इन्फेक्ट हो जाएगा ये तो. अच्छा, मुझे सेटअप करो ताकि मैं मनी कमाना शुरू करूं. How is a bomb in your chest empowering? I see the bomb as a symbol of my importance. And it's a constant reminder to everyone of the sacrifice I was willing to make. The freedom I've given up, the pain, it's not something that just anyone has the resolve to bear. Wow, now I want to get my very own bomb. Because that's not absolutely insane. ठीक है, वैसे तो काफ़ी क्लेवर है कि भाई इनका पैसा मैनेज करता है, तो लगता है इसलिए बॉम्ब लगा दिया कि ये भागने की कोशिश करे या इसको कोई पकड़ ले या कुछ. तो बस बॉम्ब लगा हुआ है, उड़ा दो. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. चलिए, सही बात है. तो लगता है डेलगाडो काफ़ी स्मार्ट है. लगता है तुम बाहर नहीं निकलते ज़्यादा. मैं कभी ऐसा सैक्रिफाइस नहीं कर सकता. तो एक रॉन्ग मूव और तुम गए. Essentially. But I sleep soundly knowing I'm one of the few that can piss Delgado off and live. Should I die, all of my knowledge, the accounts, the credits, it would be a mess. He wouldn't dare. He holds the trigger, but we all know that my death cripples the fleet. Call the bomb a weapon of last resort. चलिए सही है. तो लगता है काफ़ी स्मार्ट है. किसके चेस्ट में बॉम्ब एक लगा दिया. It's why he's the boss. Of course, I'm not the first reckoner to bear a bomb under my rib cage. अच्छा. But Delgado was smart enough to continue the tradition. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Bugin would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. अच्छा. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. ठीक है, तो लगता है हमारा कुछ अकाउंट वगैरह सेटअप कर रहा है. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us.
ठीक है, तो चलिए पैसे कमाने का टाइम, ये तो बहुत आसान था। कोई और मॉडिफिकेशन जिसके बारे में मुझे पता हो? None. Other than my chest and arm modifications, I am but a simple man. Is the interview over now? Can we get back ठीक to है भाई, work? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए पैसे कमाने का The टाइम। perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. तो ठीक है, लगता है काफी काम करेंगे हम साथ में। छोटे जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं है। बताओ बस, हो गया ना? किस टाइप के जॉब्स? Oh, you know, smuggling, piracy, taking things that aren't अच्छा। yours. Nothing that should keep you up at night. Well, depending on your methods. डिपेंडिंग ऑन मेथड्स। तो लगता है कुछ चोरी वोरी करनी है तो ऑप्शंस रहेंगे, मार के कर सकते हैं या थोड़ा सा छुप छिपा के कर सकते हैं। ठीक है, तो लगता है काफी If बिजनेस Maeve होगा is साथ chosen में। wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say. So you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. ठीक है, डेलगाडो से बात करनी है। You can get work from the boards near the Reckoner's Core. Boss will make sure you इधर मिशन बोर्ड है, तो ये देखते हैं। अच्छा, तो ये सारे मिशंस हैं जो हम कर सकते हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए। क्या है, जैसे कि इसमें पायरेसी है कि भाई कोई यूसी वेंचर 2 है, शिप होगा, वो रिकर्शन मॉड्यूल्स कैरी कर रहा है, तो 150 kg है उसका वेट। अच्छा, और इसके लिए हमारे को 6500 क्रेडिट्स मिलेंगे। पायरेसी और ये रेड है, तो और ये स्मगल है। लगता है हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पे स्मगल करेंगे। तो ठीक है, लगता है काफी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, बाद में देखेंगे। अभी चल के जो है बात करते हैं डेलगाडो से। ये रहा। There is our other new recruit. चलिए, बॉस of the Now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. बिल्कुल। अच्छा, I'm just waiting to cash in. I won't disappoint. You better not disappoint, or you'll find yourself answering to me personally. शुरू में threat. Let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. अच्छा जी, क्या बात है, गॉट इट बॉस। मुझे ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। आई होप इसका मतलब ये नहीं कि फ्लीट बिफोर ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे लेट तक सोना पसंद है। पायरेट ऑर्गेनाइजेशन के इतने रूल्स क्यों? Of course we have rules. If you think the Crimson Fleet was built on a lawless dream, think again. Our influence, our money, our respect comes from meticulous planning and every last soul in the fleet following my orders to the letter. That is why you need to learn to place the fleet before everything. चलिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर जो है ये ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा। Hey, if you've got a problem, I can decorate that wall behind you with your brains. गुस्सा हो गई है तो। Room could use a little color if you ask me. अच्छा जी। It's all right, neighbor. I admire this rook's backbone. चलो, Takes a lot of guts to crack jokes with the threat of death staring them in the face. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, rooks.
Where we are going, you're going to need it. Oh, कहाँ जा रहे हैं? God, don't tell me you're dragging him down to Suvorov for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. अच्छा जी. Crix's legacy is no story, neighbor. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lock cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. ठीक है, तो लगता है कि उसकी कोई लेगेसी है वहाँ पे. पहले भी 10 बारी जा चुके हैं, 12 रूक्स मर चुके हैं वहाँ पे, बट ये अभी भी जो है इसने उसका जो है होप गिव अप नहीं करी है कि उसको मिलेगा वहाँ पे. तो क्या है ये क्रिक्स लेगेसी? ये क्या है जो नेवा बोल रही है कोड के बारे में? ठीक है, तो क्या है, हर नए पायरेट को लेके जाते हुए इनिशिएशन पे? Where else could I find such a perfect location to weed out any rooks who'd be wasting the fleet's time? अच्छा जी, चलो सही बात है. कितने टेस्ट और इनिशिएशंस होते हैं? What? Were you expecting a goddamn graduation ceremony? Think I'm just going to slap a skull on you and send you on your way? Make no mistake. You are being tested all the time. Every job you take will be under constant scrutiny. And neighbor? Oh, she's just waiting for you to screw things up. जैसे होगा वो फिर बोलेगा बे साले मैं मार दूंगी तेरे को. ठीक है, ये क्या है कोड जो नेवा बोल रही है? Through a bit of luck and a hell of a lot of cash, Neva was able to get her hands on an access code to the inside of the lock. This will be the first time someone from the Crimson Fleet has set foot in there for, well, since Crix left the place behind. It has been frustrating being this close to potential clues, but not being able to find a way through those prison walls. ठीक है, तो क्या है क्रिक्स की लेगेसी इस कह रहे हो, थोड़ा और तो बताओ. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score, one that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. अच्छा जी. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy, and everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording. And not a lot of facts. तो देखेंगे ये फैक्ट है या नहीं है? Believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC Sysdef. अच्छा, तो लगता है कि वहाँ पे बहुत पैसा है या कुछ ऐसे मटेरियल है जिससे हम बहुत अमीर हो जाएगा ये क्रिम्सन फ्लीट. तो ठीक है, तो अगर नेवा सही है और क्रिक्सिस की ये जो लेगेसी है सही नहीं है तो Listen to the words that I am saying. The legacy. चलिए, इसको तो पूरा यकीन है. You will find that out in due time, provided you're willing to put in the work. Nothing worth having ever comes easy. Hey, I've done my fair share of treasure hunting. Never panned out. But I'm sure this time is going to be different. ठीक है, देखते हैं. सैम को यकीन है कि हो सकता है. तो अगर जैसे जैसे और पैसे आए ऐसे किया हमने तो बड़ा टारगेट नहीं बन जाएगा यूसी सिस्टेफ के लिए? You forget the UC is still licking its wounds from the colony wars. They don't have the capability to mount a full-scale assault. अच्छा. And if they were foolish enough to attack, we would have the manpower to push those pendejos right back to Jemison. If we have Crix's legacy. चलिए, तो इसको तो पूरा यकीन है. चलिए, तो हम इसके हिसाब से अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, ठीक है? Exactly. Now you're beginning to understand. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. ठीक है, चलिए. 5,000 क्रेडिट्स. पायरेट शॉ बकलर ऐड हुआ.
और ये वाला मिशन कंप्लीट हुआ इसी के साथ। अचीवमेंट अनलॉक हुआ, रूप मीट्स किंग। तो क्रिम्सन फ्लीट ज्वाइन कर लिया। अगला मिशन हमारा अपडेट हो गया। लगता है हम डेलगाडो के साथ जो है जाएंगे ये ट्रेजर की खोज करने, शुरुआत करेंगे उसकी। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, आज के लिए जो है यहीं पे रुकते हैं। आज हमने जो है क्रिम्सन फ्लीट ज्वाइन किया और डेलगाडो से बात करी, इनका पूरा जो बेस है उसको एक्सप्लोर किया। तो अपनी जो स्टारफील्ड की कहानी है इसको अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये डेलगाडो हमें कहाँ पे लेके जाता है और वहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।